Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear friends, followers and GateLive family, welcome once again in my live season. और मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ आप लोगों के नज़दीक नया प्रोजेक्ट लेके। ठीक है, कि आप लोग मेरा साउंड सुन पा रहे हो क्या? अगर नहीं सुन पा रहे हो, थोड़ा दिक्कत हो तो बताना। Everyone, if you hearing me, okay. Gain Luca, all Atakul. Thank you so much, Gain Luca. Thank you so much for joining my live. This is our project. This project name is NUM. Okay, Namada token, and short name is NUM. ओके सो अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे, बातें करने के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप लोगों को मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप लोग ज़रूर मुझे बताना, ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूंगा फिर से आप लोगों को बताने के लिए। सो डोंट बी लेट, डोंट बी हेजिटेट माय डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर। ओके सो हम लोग जाते हैं अभी इस टोकन के बारे में जानकारी लेने के लिए। सो दिस इज अवर गेट विल इनिशियली लिस्ट नमादा NAM नम स्पॉट ट्रेंडिंग स्टेक GT ऑब्लिक USDT num oblique num, okay, in a launch pool to earn num hourly. Okay, that's good. A gate will list namada num for spot trading at 10 on June 19 2025 UTC to reward our user. You can stake GT oblique USDT oblique num in namada num launch pool to earn 14,28,572 num airdrop for free with reward distributed every hour. Okay. Okay. And Namada Num sport training start June 19 2025 10 UTC. ओके एंड डिपॉजिट नम, और ये है हमारा डिपॉजिट का एड्रेस, और इसी जगह से आप लोग डिपॉजिट कर सकते हो सेम टू सेम। सो लुक एट दिस आर ऑन चेन डिपॉजिट एंड गेट कोड। दो तरीका है, आप लोग इसी जगह पर ज्वाइन कर सकते हो और डिपॉजिट कर सकते हो दो तरीके के साथ, ऑन चेन डिपॉजिट एंड गेट कोड के साथ। कॉइन नाम ही चाहिए मेरे ख्याल से इसी जगह पर। हाँ, यूएसडीटी बहुत सारे टोकन है इसी जगह पर नाम, और नेटवर्क नाम, और उसके बाद इसी जगह पर क्यूआर कोड है और आपका यूआरएल कोड है। इसको लेके कॉपी करके आप तुरंत डिपॉजिट कर सकते हो। कम से कम 30 ब्लॉक है, 30 ब्लॉक कन्फर्मेशन लगेगा, 100 ब्लॉक कन्फर्मेशन लगेगा विड्रॉल के लिए। और ये गेट कोड के हिसाब से आपको अदर्स कोई भी टोकन से अगर डिपॉजिट करना है गेट कोड के सहारे, तो फिर इस जगह पर गेट कोड डालना है, कन्फर्म देना है, डिपॉजिट इन्फॉर्मेशन देना है, ओके कंप्लीट हो जाएगा। इतना भी टफ नहीं, इजी है। ओके सो दिस इज अवर ट्रेड नाम एंड यूएसडीटी मार्केट बाया। आप अगर ट्रेड करना चाहते हो, ट्रेड करके अगर नाम लेना चाहते हो तो फिर इस जगह पर आप ट्रेड कर सकते हो। ये ट्रेड का लिंक, प्लेटफॉर्म का लिंक है। नमादा नाम लॉन्च फेज 1 जून 17 2025 एट 13 जून 19 2025 एट 13 UTC। ओके, टोटल स्टेकिंग रिवार्ड 2,30,000 नम। ओके, पहले इसको देखते के हिसाब से क्या क्या मिलने वाला इसी जगह पर। देखो, स्टेकिंग पूल जीटी और यूएसडीटी न्यू कामर एक्सक्लूसिव है, न्यू कामर एक्सक्लूसिव। मैक्सिमम स्टेकिंग अमाउंट पर यूजर 2000 जीटी और 5000 यूएसडीटी, और मिनिमम स्टेकिंग अमाउंट पर यूजर 0.01 जीटी और 0.1 यूएसडीटी। ओके, स्टेक टू अर्न नाउ, इसको क्लिक करोगे तो इसी जगह पर आपको ले आएगा। ये है हमारा नाम, स्टेक करना चाहते हो तो। और फेज 2 जून 19 2025 एट 13 जुलाई 9 2025 एट 13 UTC। ये फेज 2 है, ठीक है। और टोटल स्टेकिंग रिवार्ड ऑलमोस्ट 11,98,572 नाम मिलेगा। और इसको भी अगर ओपन करें हम लोग तो फिर इस जगह पर देखने को मिलेगा स्टेकिंग पूल जीटी यूएसडी न्यू कामर और नाम, ये तीनों की तीनों टोकन इसी जगह पर है। और मैक्सिमम स्टेकिंग अमाउंट 2000 जीटी, 5000 यूएसडीटी और 40,000 नाम टोकन। और मिनिमम स्टेकिंग अमाउंट पर यूजर 0.01 जीटी, 0.1 यूएसडीटी, 0.5 नाम। ओके, NAM। और स्टेकिंग टू अर्न नाउ सेम टू सेम। Okay, so unlocking rules and 100% unlock. Okay, gate launch would allow user to stake early. You can stake your asset before the project
Okay, before the project officially launch, ensuring you start earning reward immediately once mining being. Okay, or okay, reward distributed. The system will distribute it. Token reward to user spot account every hour based on the proportion of asset staked by each user. Newcomer exclusive staking pools. Only new user who sign up after June 15, 2025 at 0000 UTC or eligible. Okay, Gate Launchpool FAQ. How to participate? ओके, इस जगह पर हाउ टू पार्टिसिपेट लिखा है, तो आप लोग कैसे इस जगह पर पार्टिसिपेट करोगे इसके बारे में अभी जानकारी देंगे. And MI007, my lovely dear friends, once again, welcome in my life. Once again, thank you so much. Thanks a lot, my dear friends. Thanks a lot. So इसी जगह पर अभी आप लोग देखो न्यू कमर कैसे इसी जगह पर हिस्सा ले सकते हैं. ओके, पार्टिसिपेट लॉगिंग and to your GateIO account and complete identity verification. Navigated to Launchpool, hold at last 0.01 GT oblique 0.1 UGT oblique 0.5 NAM. Click stake or exclusive staking limit privilege for VIP user, VIP 5 and above user enjoy exclusive staking limit when participating in Launchpool with up to 500% staking limit bonus. Okay, so VIP level or GT pool maximum staking amount per user. Okay, VIP 0 to VIP 4. Okay, 2000 GT hold कर सकते हो. VIP 5 3000 GT, VIP 6 4000 GT, VIP 7 500 200 GT और VIP 8 6800 GT, VIP 9 9000 GT, VIP 10 to VIP 16 12000 GT होल्ड कर सकते हो. ओके, okay, the project information provided by the Namada NAM team. Please follow the Namada NAM website for more details. Okay, introduction. Namada is the composable privacy layer of the multi-chain. It is a proof of stake layer 1 blockchain that protect user personal data by providing a shared asset hub and enabling shared cross chain transaction. Okay, Namada is capable of supporting any asset and can be used to retract data protection to existing chain, depth token, and NFTs. Primarily built in Rust, Namada uses uh, commit BET, okay, consensus and the IBC intra-blockchain communication protocol for a multi-chain interoperability, but can be upgraded to support additional ecosystem beyond IBC by leveraging advanced cryptographic standard like JetK, Snark, and a potential for interoperability. Namada position itself as a useful cryptographics primitive for user to protect their on-chain data while interprotecting with a wide variety of other blockchain and protocol. Token name Namada. Okay, token symbol NAM. Maximum supply 10 billion. Okay, token type mainnet native token. टोकन आईडी, ये है टोकन आईडी. इसी जगह से आप लोग ये नमादा का है देखो नमादा डॉट बलापोरे. सो इसी जगह से आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो. देखो इसका वेबसाइट है. वेबसाइट मतलब टोकन का वेबसाइट है. इसी जगह से आप लोग बाई सेल कर सकते हो. देखो ये प्लेटफॉर्म है. इसी जगह से आप लोग जरूर. अच्छा है, ये है क्या है, ये वैलिडेटर्स. ओके, दैट्स गुड. ये क्या है, IBS. बहुत सारे ऑप्शन है इसी जगह पर. सो इसी जगह पर आके आप लोग ज़रूर, ओके, आप लोग ज़रूर इसी जगह से टोकन आईडी इस एरिया से आप लोग बाई कर सकते हो. टोकन डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनलॉकिंग रूल्स. Okay, backers of the Anoma Foundation 32%, early core contributor 18.798%, protocol maintenance R&D, ecosystem and community development 17%, public allocation
completed RPGF program 16.1108%, public allocation future RPGF program 16.0540%. दिस इज और वेबसाइट एड्रेस, दिस इज और व्हाइट पेपर एड्रेस। ओके, इसको जानकारी लेंगे हम लोग, डोंट वरी, बाद में, पहले खत्म करते हैं। GateLive investment disclosure. GateLive did not invest in Namada Num. Okay, note GateLaunchpool. GateLaunchpool is an innovative staking and airdrop platform where user can stake GT, BTC, ETH, USDT or other token to earn hourly airdrops of hot and new coin with low entry barriers and high APR. It's the ultimate platform for effortlessly capturing market opportunities. Please complete identity verification before participating in Launchpool to enhance the security of your account and asset. Please adhere to the relevant rules of the event. When participating, any cheating behavior is prohibited, and occurrence of any dishonestly will result in the disqualification of the reward. Where any discrepancy exists between the translated version and the original English version, the English version shall prevail. Get reserve all right to the final explanation. This event is not applicated with Apple Inc. User in the United Kingdom and other restricted locations cannot access the service, including the participation in this event, game or competition. See the user agreement for further details on restricted location. Risk warning. The project team does not guarantee that token price will not be lower than its initial sale price. Please invest with caution and don't invest beyond your financial capacity. The crypto project is still in its initial stage. Factors including the operation and underlying technology of the project and others related regulatory activities might contribute to significant risk. Advanced technical and financial knowledge is required to understand and evaluate the inherent risks of crypto asset investment. The market volatility is high and the price of a token might fluctuate strictly due to technical, regulatory, and marketing factors. User may not be able to withdraw all the purchased token due to technical issue of the project or gate. Gate June 17, 2025, Gate to Crypto. Gateway to Crypto trade over 3,600 cryptocurrencies safely, quickly, and easily on Gate. Take action now. Sign up and claim up to 10,000 in welcome reward. Invite friend and earn a 40% commission. Stay connected. Visit Gate official website. Download the Gate apps desktop. Follow us on X, Twitter to get more bonus. Join our Telegram community to discuss trending topics. Engage with our global community for the latest insight, transparency, and security. Check our 100% proof of result. ओके, ये था पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नमादा टोकन का। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट वन। ओके, ये हमारा फर्स्ट वन है। और दूसरा जो है इसी जगह पर स्टेक टू अर्न, इसी जगह पर देखो दो अलग अलग सिनारियो देखने को मिल रहा है आप लोगों को, है कि नहीं? दो अलग अलग सिनारियो देखने को मिल रहा है इसी जगह पर। जैसे कि ये जो हमारा जो हमारा स्टेकिंग है इसी जगह पर जीटी पूल है, नम पूल है, यूएसडीटी पूल है। लेकिन दूसरा जो है इसी जगह पर ओनली फॉर जीटी पूल और यूएसडीटी पूल है। सो इसी जगह पर हम लोग देखेंगे जो जीटी पूल है इसी जगह पर 20 डेज के लिए माइनिंग होना चाहिए। एपीआर मिलेगा 1.82% और स्टेक करना है इसी जगह पर डायरेक्टली माई स्टेकिंग कि मेरे पास 2.62 जीटी है अभी तक, बाद में करूंगा। और नाम पूल इसी जगह 20 डे और एपीआर मिलेगा 324.04% और ये यूएसडीटी पूल एपीआर मिलेगा 22.2%। ओके, सो ये तीनों के तीनों इसी जगह पर और इसी प्लेस पर है ओनली फॉर जीटी। ये भी 2 डेज के लिए, जस्ट 2 डेज, ओनली फॉर 2 डेज के लिए है और एपीआर मिलेगा 2.91 जीटी। और जो यूएसडीटी पूल है 2 डेज के लिए ये 68.69% एपीआर मिलने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही कम टाइम है, 2 दिन है, 2 दिन, जस्ट 2 दिन के लिए। तो करना है तो इसको करो।
पहले वाला करोगे तो 20 डेज के लिए माइनिंग स्टेक करना पड़ेगा, और दूसरा जो है इसी जगह पर वो सिर्फ 2 डेज के लिए, ओनली फॉर 2 डेज के लिए आप इस जगह पर स्टेक कर सकते हो। प्राइस पूल देखो, आपको इंडिविजुअली आवर्ली रिवॉर्ड कैप मिलेगा 62.5 नम, और प्राइस पूल आवर्ली कैप मिलेगा जीटी होल्डर के लिए 3125 नम। ओके, पार्टिसिपेंट ऑलरेडी कर चुका है। यूएसडी का कितना 879, बट पार्टिसिपेंट जीटी के हिसाब से 8901 ऑलरेडी कर चुका है इसी जगह स्टेकिंग। आप लोग चाहो तो भी कर सकते हो, डोंट वरी, थोड़ा तो कुछ ना कुछ आएगा ही इसी जगह पर। ओके, तो जल्दी से जल्दी स्टेक कर लो आप लोग। सो अभी इसी जगह पर दोनों की दोनों खत्म हो गया। हम लोग पहले देखेंगे इसका ट्विटर का पेज देखेंगे। ट्विटर पेज ये है पूरी की पूरी ट्विटर पेज, नमादा नमादा NAM का ट्विटर पे। ओके, नमादा देखो, फॉलो कर देना, ऑब्वियसली फॉलो कर देना, क्योंकि अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, अपग्रेड मिलता रहेगा आप लोगों को। इस जगह पर पहले हम लोग FAQ पढ़ेंगे। सो दिस इज आवर FAQ अबाउट द लॉन्च पूल। ओके, हमारा लॉन्च पूल ऑलरेडी आ चुके हैं। सो अभी FAQ लॉन्च पूल के बारे में थोड़ा जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके, जस्ट वेट माय डियर फ्रेंड, जस्ट वेट। इसी जगह पर ओके, ठीक है। So GateLive Launchpool FAQ. What is Gate Launchpool? Gate Launchpool is an innovative staking and airdrop platform where user can stake GT, BTC, ETH, USDT or other token to earn hourly airdrops of hot and new coin with low entry barriers and high APR. It's the ultimate platform for effortlessly capturing market opportunities. ज्वाइन नाउ, इसी जगह पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को इसी प्लेस पर ले आएगा, ज्वाइन नाउ पर। हाउ कैन पार्टिसिपेट इन गेट IO लॉन्च पूल, गेट लॉन्च पूल। ओके, फर्स्ट लॉग इन टू योर गेट अकाउंट and navigated to the Get Launchpool page, then choose the project you want to participate in and stake your asset. Which coin can I stake in Get Launchpool? The token eligible to participation will be announced on the mining page of each project. Please visit the corresponding page of Get Launchpool to view more detail. How many token will be rewarded? Hourly staking reward equal individual last 1 hour valid staking amount oblique total pool staking amount into hourly reward pool. The platform will take multiple snapshot of personal staking amount each hour and take the average staking amount as the valid staking amount. How are reward distributed? The platform will take multiple snapshots of personal staking amount, hourly and token reward are distributed to eligible user. Hourly earning will be distributed into user spot account. Okay. कहाँ चला गया इस पर? ओके, when will the stake asset be redeemed? Okay, after the user redeem in advance or the staking is completed, the stake asset will be transferred to simple earn by default. If this option is unchecked, the stake asset will be redeemed into spot asset. If the amount of a redeemed asset is too small and does not meet the minimum coin amount of a simple earn, the asset will be automatically transferred to spot asset. If simple earn does not support the claim of the redeemed token, the asset will also be automatically transferred to spot asset. Can I redeem my stake asset at any time? The platform will take multiple snapshots of personal staking amount each hour and calculate the valid staking amount. However, early redemption might result in the loss of accurate reward. Please maintain stable staking amount to ensure mining reward. In addition, each staking pool imposes a daily redemption limit. Individual user can only withdraw up to 3 times a day per pool.
Please plan your redemption carefully to maximize your reward and avoid any potential impact on your earning. Okay. Can I add an additional stake asset? You can increase your stake asset at any time. The more token you stake, the greater your potential mining reward. However, once the reward cap is reached, you will no longer receive staking reward. Can I participate in multiple projects at the same time? When there are multiple Launchpool projects going on at the same time, you can stake in different pools to receive new token mining reward for multiple projects. Each staking pool need to be staked separately. If you only stake asset in pool A, you will not be able to obtain reward from pool B. You can stake pool A and pool B separately to obtain the corresponding mining reward of new token. What is the maximum mining reward I can receive? The hourly reward hard cap per user for each project is different. Once the cap is reached, no further staking reward will be granted. Please refer to the relevant announcement of the mining phase for the reward hard cap limit for each project. Will staking asset in the gate launch pool impact my BIP level? No asset stake in the gate launch pool will be included in the asset holding calculation for holder airdrop launch pool and BIP privilege. What will happen to my funds if the project is ended early? In case of early ending, your stake principal will be automatically redeemed as soon as the project is ended, and your last interest will be distributed on the hour after the end time. The interest distribution before the ending will not be affected. Okay, about annual percentage rate APR. When the reward coin is the stake coin APR equal total reward release in the last hour into last hour total stake into 365 into 24 into 100%. When the reward coin is not the stake coin APR equal total reward release in the last hour into closing price of the reward coin of the last hour oblique last hour's total stake into closing price of the stake coin of the last hour into 365 into 24 into 100%. The APR is an estimate and for reference only. The actual annualized return you finally receive shall prevail. Okay, APR data is updated hourly. Okay, I hope you understand about this gate launchpool FAQ. Everyone, if you have any question. ओके सो अभी हम लोग देखेंगे क्या अभी हम लोग देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट तो ये है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट नमादा ओके mainnet live API mainnet live API okay shell up mainnet live discovery compressible privacy layer, shell action, governance, unified shell set, IVC, interoperability, get start, get reward, staking. Okay, that's a good. Okay, इस जगह पर यही है और कम्युनिटी के अंदर क्या है कम्युनिटी के अंदर है ट्विटर डिस्कॉर्ड नमादा कम्युनिटी शेल ओके डेवलपर्स run a full node okay become a validator set a local network okay that's a good learn में क्या है block okay talks namada roadmap और इकोसिस्टम और कुछ भी नहीं है ये हमारा गेट ओके दैट्स अ गुड सारे के सारे इसी जगह पर खत्म नमादा गेट स्टार्ट सो ये क्या था चला गया कहाँ पर छोरा नीचे ओके फिर से गायब हो गया जस्ट वेट इसको पढ़ना है ओके आवर a new era of a shielded okay multi-chain interaction namada is the shielded asset hub rewarding you
to protect the multi-chain. Okay. Compressible privacy layer. Namada delivers a plug-and-play privacy layer for Web3, enabling users to protect their personal data when using their favorite asset, decentralized application, and blockchain. Okay, Namada, okay, groundbreaking approach offer user the ability to choose between transparent and a shielded balance and action. Okay, reward for strangeness, the shielded set by a shielding asset, all with state of the art data protection guarantees. ये सारे के सारे क्या है? टोकन है, सारे के सारे टोकन का नाम है फीचर unified shielded set. Okay, consolidated asset fragmented across different blockchain into a single shielded asset hub. Namada's unified shielded set is capable of supporting any asset and enable shielded cross-chain interaction. One hub, multiple asset with full control over what you share. That's good. Get a reward for shielding your asset. Namada reward you for helping protect the multi-chain ecosystem by keeping your asset in the shielded. Get you help strengthen. Namada data protection granted earning passive reward in return for your valuable protection participation. Get acknowledged for enhancing network protection. Shielded action for cross-chain DEFI. Namada shield action enable you to engage in cross-chain decentralized finance while shielding your personally identifiable information. Your data stays safe and when interacting with transparent blockchain and application. Remain in the shielded set and enjoy confidential and secure cross-chain interaction. IBC interoperability. Okay, Namada integration with the IBC protocol ensures a seamless connection across a Cosmos blockchain and Vion support for additional ecosystem like Ethereum and Solana is coming soon. Project across transparent chain while sharing your personal data. Okay, use Namada. Okay, that's good. And MI007 market outlook today. Thank you so much once again, MI007 for joining my live. Shield asset, okay, gain privacy for your asset and get reward. Hit the shield button, connect your external wallet, choose the asset and amount and hit shield, start shielding. Okay, stake num and get reward will helping secure Namada proof of stake system. Govern board and help govern the Namada protocol to a prosperous future. Shielded expansion, okay, shielded ignition, maintain launch, shielded integration, shielded transformation, the shielded multi-chain future, Namada roadmap. Okay, get involved, join the community. Okay, ये सारे के सारे community है. Develop and create on Namada, run a full node, become a validator, set up a local network. Okay, और ये है Namada mainnet is here, home. Okay, press Anoma, trusted setup, security, Discord, ये सारे के सारे ओके खत्म. सो ये था हमारा वेबसाइट के बारे में भाई. ठीक है एवरीवन, दिस इज आवर जस्ट वेबसाइट. पूरी की पूरी हमारा जस्ट वेबसाइट है. मेन नेट लाइव शेल आप. ओके, अभी हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे व्हाइट पेपर के बारे में. व्हाइट पेपर क्या कहने वाले हैं अभी. सो दिस इज आवर
Namada dog. ये है नवादा वेबसाइट, व्हाइट पेपर, सॉरी. Saratau, thank you so much, Saratau. What's about you? And welcome, my dear friends. Welcome in my life. Thanks a lot for joining my live once again. Thank you for supporting everyone, my lovely, sweet, dear friends and followers. Okay. So, Namada, okay, about Namada. Namada is a data protection blockchain using zero knowledge, a proof technology. Namada cryptographical feature give user asset agnostic multi-chain data protection and is being built by the Anoma Foundation. Okay. Mahir BD 98 GG. মাহির ভাই কি জিজি মতলব কি বুঝি নাই ভাই। মাহির ভাই, আমি যা বুঝতে পারছি আপনি বাংলাদেশি। তো জিজি মানে কি বুঝি নাই ভাই। তবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জয়েন হওয়ার জন্য। বিল্লালা জাইরি, থ্যাংক ইউ সো মাচ बिल्लाला फॉर ज्वाइन माय लाइफ। बिल्लाल जाहिरी, मेरे ख्याल से आपका नाम बिल्लाल है, बिल्लाल। ओके, वेलकम 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 इन माय लाइफ वंस अगेन। तो जो बंदा आज ही नया पहली बार मेरा लाइव पर ज्वाइन हो रही हो, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग ज़रूर फॉलो कर देना, ठीक है। और अगर कोई भी जानकारी चाहिए फॉलो करने के बाद वो भी मुझे पूछना, मैं कोशिश करूंगा तो ऑब्वियसली आप लोगों को फिर से दोबारा बताने के लिए, अगर टाइम मिल सके और हो सके तो ज़रूर ज़रूर मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। सो जो बंदा आज ही ज्वाइन हुआ हो तो जल्दी से जल्दी फॉलो कर दो और धीरे धीरे भाई सुनता रहो और लाइक बटन को भी हिट करते रहो, ठीक है। सो चलते हैं। Okay, for specific information describing how to access and participate in the current Namada mainnet, please join, jump the here. Key innovation. Okay, jet cash like shell transfer for any asset, fungible and non-fungible. Okay, reward for keeping asset in the shelled set over view of feature. Okay, proof of stake with governance to secure and evaluate Namada. Okay, and first finality BFT with 4-second block. IBC connection to chain that already speak IBC, all Cosmos chain, multi-asset shielded pool, MASP. Um, convert circuit, shield set reward, laser application for high level interaction. We recommended article here. What is Namada? Introduce the Namada multi-chain asset, agnostic data protection, talk and product. And to learn more about the protocol, we recommended the following in-depth resource. Okay, Namada specification, code base. Okay, इसको हम लोग बाद में देखेंगे अगर टाइम मिले तो। गेटिंग स्टार्ट, अभी इसी जगह से गेटिंग स्टार्ट हो चुका है। Okay, so about this documentation, welcome to Namada Docs. This book is intended for any audience looking to use Namada, operate a full node or validator, develop on Namada. Reporting hub. If you find any bug along the journey, please report them in the Namada repository. Okay. Feel free to also join the Discord and ask questions in the Namada channel. How to read this book? Where here are some useful tips for reading this book. Okay. Comment start with hash. Okay. This is a comment. Make sure you read them. Simple outputs start with an arrow.
This is an example command line output useful for comparing. User defined input are in Angel brackets. This is a command you should run slash the greater than with your own input less than और greater than दोनों की तरफ. Okay, about this documentation, this book is written using Nextra. The source can be found in the Namada documentation repository. Contribution to the content and the structure of this book should be made by pull request. Okay, quick start. Getting start with Namada is as simple as install Namada, install the Namada binaries, Namada, Namadan, Namado, Namadek, and place them in your path. Okay, you can build from source or download pre-built binaries from the release page of the Namada GitHub repo. Docker images are also available. Install commit BFT. Namada require commit BFT version version 0.37015 for consensus. Install commit BFT and place it in your path. Join a network. Set the network page for details on how to join a network. Joining a network is a one-step process. To download the proper Genesis file, version code, and check sums and initialize your nodes storage and configuration. You can join a test net, local net, or soon mainnet. You will need to know the chain ID of the network you wish to join. You can then join as a full non-validator node by running. Okay, Namada uh, um, utils ज्वाइन नेटवर्क चेन एक कोड है, ये मेरे ख्याल से पूरी की पूरी कोड है इसी जगह पर, इसको कॉपी करना पड़ेगा. हाँ, कोड है. द न्यूली इनिशियलाइज चेन डाटा विल बी फाउंड इन योर बेस directory. Okay, see the list of all utilities comment. Okay, अगर कॉमन जानकारी चाहिए तो इसको क्लिक कर, इस जगह पर सारे के सारे कॉमन है. Okay, run a leader laser node. You can start your node with Namada laser run. Okay, your node will bring syncyne with the chain. For a more verbose output, one can run Namada log info, a comment, to keep your node running in the background. After choosing your terminal, you will likely want to use either tmux or a system service file. Okay, see the section on running a full node for more details on this, as well as configuration, option, and environment variable. CML 1978 free. Okay. Wait for your node to finish syncing. Okay, this can take several hours depending on the chain highest and your system space. Okay, create an account. Okay, create an account. Create a new implicit account in order to receive token. This will generate a new account and store it in the default keychain. You can view the account address with. Okay, get some token from the first okay, testnet only. Okay, check here for a list of testnet fuset. If your testnet is not listed,
Ask in the Discord server for more information. Explore. There are variety of cool things you can do next. Shield some num or other token. Bond some token to a validator. Become a validator yourself. Participate in governance by creating or voting on personal send or receive token from another chain via IBC. Okay, install Namada. Okay, install Namada. Will Windows various binaries are available. We recommend using Linux or Mac OS with Namada. Installing Namada. Namada can be listed installed through the following method from source, from binaries, from a Docker image. The hardware requirement for installing and running a Namada full node can be found. Okay, source. Okay, install from a source. Okay, please note be although installing from source is a recommended route for installing Namada, it can prove to be difficult and is not recommended for beginner. For a first time installation, the installation process can take up to an hour. Building binaries and source can also take a long time depending on the machine. Okay, request. Ensure the correct pre-requisite okay, have been downloaded and installed. And installing Namada. Okay, once all the required dependencies have been installed, you can run the following to clone the source code from the Namada repository, okay, and will it. When joining mainnet or a public testnet, please first refer to the network supporting documentation or ask in a Discord server to find which version of the software you will need. Adding binaries okay, to path, PATH. Okay, the binaries should be added to path from the make initial command. However, if this for some reason did not work, a solution may be to copy the binaries from Namada oblique target oblique release to user oblique local oblique bin oblique, for example. You can verify the binaries are correctly added to path by running the command, okay, which Namada. Using the binaries, see the page on using Namada binaries for more information, troubleshooting. Please see the troubleshooting page for building from a source for more information. Okay, request it, okay. If you would like to install Namada from source, you will have to install some dependency first. Rust, Git, Cling, OpenSSL, LLVM. Okay, Rust. At the end of the installation, make sure that cargoes win directory home. Okay, your path environment variable, you can either restart your shell or run. Okay, to continue, if you already have Rust installed, make sure you are using the latest version by running remaining dependency. Then install the remaining dependency. Okay, running the following command should install everything needed. 24x some same as above. Expect use or make installing the export command in line tools should provide you with most everything you need. Okay, Protoc is also required on Mac. You can install it with, okay. When running, it should output at last. Please refer to
Protoc installation doc. Okay, for other installation option troubleshooting. Not troubleshooting installation from source, not enough RAM. Building binaries locally is a computationally have task and will put your computer to the test. The compilation usual require at latest 16 GB RAM, and depending on the optimization of your machine could require slightly more. For some machine, slightly less. For this reason, computation can sometimes fail. The error, okay. This is common error that can sometimes means your computer run out of memory when compiling. To resolve this, try closing all other application and recompiling once or twice more. Otherwise, more RAM will be needed. Instead of adding more physical RAM, you can also try addition 16 GB of swap space. Okay, compiling for the first time. গোলাম রাব্বানি শুধু টাকা আর টাকা, এত প্রজেক্ট পাইলে হয়? শুধু টাকা আর টাকা, কি যে কন্ডে ভাই, এত কষ্ট করে করতেছি, মাত্র দিব 10 টাকা। সেই টাকা আগের মতো নাই রে ভাই, সেই টাকা আগের মতো নাই, মাত্র 10 টাকা দিব এত কষ্ট কইরা। वेलकम गुलाम रब्बानी, वेलकम इन माय लाइफ। आप आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा लाइफ पर ज्वाइन होने के लिए, थैंक यू सो मच। Compilation error due to missing library installation when building the variants for the first time can be a common problem. Okay, and linker CC not found. If once run into the error, okay, it may not resolve by running. Another solution can sometimes be installing. Okay, this can be achieved through, okay, WASM32 unknown. Another issue, the compiler may run into the is that it cannot find the, okay, this issue can be resolved by running. Okay, yes, the name of the target is, this is not the compiler unable to tell which version oblique release it is. Okay, open SSL. Okay, if you run into the error, okay, you need to install the development package of open SSL for U12. This is for Fedora. Fedora. This is protocol. Okay. For other distribution, please refer to the OpenSSL website. Our Ubuntu. This can be achieved through, okay, binaries. Install from binaries. Pre-request. The following prerequisites are needed to use the pre-compiled binary. These are commit BFT or GLIBC. Okay, downloading the binaries. After installing the prerequisiting, you can download the latest binary release from our releases page by choosing the appropriate architecture. The below code will download all the binaries for the latest release for all supported operating system. Okay. Older version of the binaries are available from GitHub. See the releases page. Unzip the tar using the following command. Okay, following command. Okay, placing the binaries into path. Okay, for U12 and make machine, the following command should work for placing the Namada binaries, okay, into your path. Once inside the directory containing the binaries,
Verify that the binaries are in your path by running the command. Okay, that's good. Using the binaries. Using the binaries. Once installed, you should have the following binaries. Binaries description. Okay, Namada, the main binary that can be used to interact with all the components of Namada, the laser node, the client, the wallet. The main binary Namada has half command for all of the other binaries. Therefore, the following commanders are equivalent. Okay. Namada command, Namada equivalent. Okay, to explore the command line interface, the help argument can be added at any subcommand level to find out any possible subcommands and oblique or argument. Okay, prerequisite. Installing commit BFT. Okay, follow this is instruction or order to set up commit BFT. Installing GLIBC. Finally, you should have GLIBC version 2.33 or higher. Mac OS, the system provide the GateLive should be recent through. Okay, and UBUNTU 22.04 GateLive is installed by default and you don't have to do anything more. Okay, UVNet 18.04 and UVNet 20.04. GLIBC has version 2.27 and version 2.29 present by default, which is lower than the required version to run Namada. We recommended to directly install from source or upgrade to UVNet to 22.04 instead of updating GLIBC to the required version, since the latter way can be a messy and tedious task. In case updating GLIBC would interest okay, you, this website gives you the step to build the package from source. Okay, Docker, Docker. Okay, that's a good. Running Namada with Docker prerequisite. Okay, in order to run any Docker image, you must first have Docker install. You can find installation instruction for your machine. Downloading the Docker image, Namada image for various version can be found in Namada. Okay, container registry or GitHub. Under the tab, you can find the latest version of the Docker image. Click on the link for the correct version of Namada that you are trying to install. For example, if you are trying to install Namada B version 0.39.0, you would click on the link for version 0.090 to download the Docker image. Run. You can list any Docker downloaded Docker image by running. Okay, the tag will be the first column of the output. Okay, is this case the full name of the downloaded image is here. Okay, running the Docker image. Once you have downloaded the Docker image, it will be useful to export some environment variables. You can run commands in a Docker container by the following method. Okay, where is any command you would run after in the terminal? For example, of you wanted to run client until join network. Okay, you would run. Okay, persisting data with Docker volume. Okay, you have prior to run the above example using the command, you would notice that will the command runs successfully, you have no way to make use of the chain data after the command completes and the container exists. You can persist the chain data using a Docker volume which bind the directory on your host machine
to a directory inside a container file system. The volume syntax in as follows. Example, join a network with a full node. There are many possible ways of working with Docker container and volume depending on your need and system setup. Here is one example of how it could be done. Create a directory on your host OS. The directory can be located anywhere you like. Will use the default. Okay. Set directory permission. Okay. The newly created directory will be owned by your current user on the host OS unless we set the appropriate permission for the directory on the host OS. The Namada container will not be able to write to it. Okay, when you run a command inside a container using the Namada Docker image, it will we run under a user Namada with a user ID. Okay, knowing this, we can set the permission on your directory appropriately. Join network using a volume. Okay, now we can run the join network command while including the flag to create a new volume. We will map the inside the container to the dictionary. Okay, we create in step 1 and 2. This will allow us to persist the for future use. Okay, if we check the dictionary on our host machine, we should see it has been popular, okay, with the Genesis files for our edit persistent Paris. Okay. Start the leader building the Docker image. Alternatively, you can build the Docker image yourself, being by exporting some environment variables. सारे के सारे कोड है, कोड के बारे में ही बताया पूरी की पूरी. Then you can build the Docker image by running. Okay, note, don't forget that trailing. Okay. तो ये तो पूरी के पूरे हमारा जो डॉक्यूमेंट है इसी जगह पर नमादा का है, पूरी की पूरी कोडिंग का ऊपर ही सिर्फ बातें किया है. कोडिंग, जस्ट कोडिंग चाहिए ये सारे के. ओके, इसको हम लोग देखते हैं हमारा स्टार्टअप रूल्स अपडेट इजियर और क्लेम के बारे में. ये तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 2-3 बार ऑलरेडी कह चुका हूँ. ये जो हमारा अपडेट है, मेन अपडेट, ये जगह पर जो मेन अपडेट है, फॉर एयर ड्रॉप प्रोजेक्ट आफ्टर सब्सक्रिप्शन सफिशिएंट बैलेंस इज नॉट रिक्वायर्ड anymore before token distribution. User who upgrade to BIP level by holding asset will have their BIP level verified during token distribution, and the final allocation they receive will be determined by their BIP level at the time of distribution. Okay, अपग्रेड के लिए मेन अपडेट क्या है? ये स्टार्टअप रूल्स अपडेट के हिसाब से रूल्स फॉर नॉन बीआईपी यूजर के लिए है. ये all non-BIP user with a spot asset of no less than $10 can enter the startup page and claim startup airdrop for free. And after non-BIP user participate in a subscription, whether they win or not will be announced after the subscription ends. User can check the result in subscription history or on the project subscription page. Non-BIP users are not granted to receive startup airdrop token. Part of luck in non-BIP user will be randomly selected or each project and evenly distributed the airdrop allocation. The total airdrop amount for non-BIP user will vary depending on the project. The number of winner and the airdrop amount are not fixed. Please pay attention to the subscription result. For airdrop project, sufficient balance is not required. And anymore before token distribution, the airdrop token will be directly distributed to the spot wallet after the subscription in. Non-BIP user who use startup voucher to join the subscription will have their voucher benefit prioritized. Startup voucher guarantee 100% corresponding share, but user still need to hold spot asset of no less than $10. Okay, और पूरी की पूरी ये हमारा स्टार्टअप रूल्स का अपडेट ऑलरेडी कह चुका है इसी जगह पर.
And Surya, hello Surya, thank you so much for joining my live once again. Surya, how are you, my dear friends? How are you? Thanks a lot for joining again. Okay, here note here the previous rules where non-VIP user were granted to receive 3 share of startup airdrop has been absolute in the upgrade. After the upgrade, non-VIP user with spot asset of no less than $10 can directly participate and receive airdrop if they win. All existing subscription share rules for VIP user remain unchanged, and they are eligible to receive the airdrop with a 100% guarantee. The higher the VIP level, the more startup airdrop share they can subscribe. Okay, non-VIP user participating in startup subscription will follow the partial winning mechanism with a random selection of user. Okay, winning airdrop for each project winner can be repeated across different projects. New rules take effect from 2 August 2025 UTC, where any discrepancy exists between the translated version and the original English version, the English version shall prevail. Get I reserve all right to the final explanation. ये था हमारा स्टार्टअप का नया रूल्स के बारे में. अभी थोड़ा जानकारी देते स्टार्टअप रेफरल कार्निवल के बारे में. सो दिस इज अवर रेफरल कार्निवाल अभी के अभी. सो आप लोग इसी जगह से जरूर आप लोग आपका फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो. ओके, फर्स्ट टाइम शेयर के लिए आपको मिलेगा 100+ स्टार्टअप. आप इनवाइट नाउ के जाके इस जगह से आप लोग शेयर कर सकते हो कॉपी करके. और इस जगह पर ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, ईमेल, व्हाट्सएप, इनलाइन सारे के सारे है, सारे के सारे हिसाब से आप शेयर कर सकते हो इस जगह पर. ओके, इनवाइट जरूर करना क्योंकि आपको 100+ स्टार मिलेगा. 100+ स्टार मिलने वाली इसी जगह पर. ओके, और इफ FAQ भी है इसी जगह पर. व्हाट इज स्टार्टअप स्टार, ये सारे के सारे पढ़ लेना आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा. अभी हम लोग देखेंगे ये जो नाम है नमादा, इसी जगह पर होल्डर पर जाने के बाद और कुछ मिलता है कि नहीं हम लोग देखेंगे इसी जगह पे. सो होल्डर एयर ड्रॉप, ये है हमारा होल्डर एयर ड्रॉप. ओके, सो ये होल्डर एयर ड्रॉप के हिसाब से हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे इसी जगह पर. तो इनकी GT यहाँ पर क्या नाम है या नहीं है. ओके, नाम मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं है, नमादा नहीं है. ओके, CRT है लेकिन नमादा नहीं है इस जगह पर. ये सिर्फ लॉन्च पूल पर है. इस जगह पर 4 ऑप्शन है, कैंडी ड्रॉप, लॉन्च पूल, होल्डर या ड्रॉप, लॉन्च पैड. तो लॉन्च पूल पर ही है हमारा नमादा. सो नमादा इसी जगह पर 2 तरीके से ओपन हुआ है. ठीक है, सो फर्स्ट वन है ओनली फॉर USDT और नम, और सेकेंड वन उसके साथ GT भी है. ठीक है, इसी जगह पर ये है हमारा सेकेंड वन जो कि GT पूल, नाम पूल और USDT पूल दोनों की दोनों एक साथ है. और सिंगल तो मैंने ऑलरेडी दिखा, इधर सिंगल है इसी जगह GT पूल और USDT पूल. ठीक है, सो आप लोग इसी जगह पर ज़रूर हिस्सा ले लेना. मैं कहूँगा आप लोगों को हिस्सा ले लेने के लिए क्योंकि आप लोगों को फ़ायदा है. 2 डेज, एक है 2 डेज़ के लिए और दूसरा है 20 डेज़ के लिए. ठीक है, एक है 2 दिन के लिए और दूसरा है 20 डे के लिए. सो आप लोग ज़रूर हिस्सा लेना. फ़ायदा तो आप लोगों का ही होगा भाई, है कि नहीं. सो अभी मैं सारे के सारे तो बातें आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ. अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी कंफ्यूजिंग है इस प्रोजेक्ट के बारे में तो फिर आप लोग ज़रूर मुझे पूछना भाई. मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को दोबारा बताने के लिए. ठीक है, ये है हमारा अनाउंसमेंट जो इन्फॉर्मेशन बताया गया इसी जगह पर. द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस नमादा नम. दूसरा है हमारा इसी जगह पर दिस इज अवर नम. इसी जगह पर आप लोगों को स्टेक करना है, स्टेक करना है. ठीक है, और ये मिलेगा आपको लॉन्च पूल पर. होल्डर या ड्रॉप के आने के बाद अथवा और लॉन्च पूल कर आने के बाद आपको मिलेगा. और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को व्हाइट पेपर के बारे में बता दिया, वेबसाइट के बारे में बता दिया, स्टार्टअप रेफरल लिंक के बारे में बता दिया, सॉरी स्टार्टअप न्यू रूल्स के बारे में बता दिया और रेफरल कार्निवाल के बारे में भी बता दिया. सो राइट नाउ माय डियर फ्रेंड्स आई विल फिनिश माय लाइफ. इंशाल्लाह हम लोग फिर से मिलेंगे 1 आवर लेटर. ओके, 1 आवर लेटर हम लोग फिर से मिलेंगे न्यू प्रोजेक्ट के साथ. सो राइट नाउ एवरीवन, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, अस्सलाम.